has been taken with direction to the respondent party to hold its intra-party elections strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, unquote. Failing which it would, quote, be ineligible to obtain an election symbol for elections. PTI assailed ECP's order before the Lahore High Court in writ petition number 81171/2023, which was initially heard by a single judge, but on PTI's request for constitution of a full bench, it was listed for hearing before a 5-member bench, together with writ petition number 332/2023. While both these petitions were pending adjudication before the Lahore High Court, PTI contended that it had conducted its intra-party elections on 2nd December 2023, but it did not withdraw WP number 81171/2023. A number of complaints were received by ECP alleging that intra-party elections were not held in PTI, and the ECP issued notice to PTI upon receipt whereof writ petition number 5791 was filed before the Peshawar High Court, and an ad interim order was obtained against the ECP that it should not pass a final order till the determination of writ petition number 5791. Subsequently, writ petition number 5791 was disposed of by the Peshawar High Court by directing the ECP to decide the matter by 22nd December 2023. The ECP passed order dated 22nd December 2023, in which it held that PTI had not complied with the directions issued by the ECP and it failed to hold intra-party elections in accordance with PTI's constitution, the Act, and the election rules of 2017. With the consequence that Section 215(5) of the Act would be attracted, pursuant to which PTI was declared ineligible to obtain the election symbol which it had applied for. The order of ECP dated 22nd December 2023 was assailed before the Peshawar High Court in writ petition number 6173, which was allowed with a short order dated 10 January 2024, detailed reasons whereof was given subsequently. Two representatives of PTI had filed another writ petition in the Lahore High Court bearing number 287/2024 against the ECP, which was disposed of by learned single judge with a order dated 3rd January 2024, holding that the prayer sought therein could only be granted if Section 215(5) of the Act was declared ultra vires the Constitution. But since the same was not challenged, the relief sought could not be granted. It was also mentioned that the petition was pending in the Peshawar High Court. An intra-court appeal was filed against the order of the learned single judge. However, a divisional bench of the Lahore High Court upheld the order of the learned single judge. Writ petition number 81171 and 332 remain pending in the Lahore High Court. Writ petition number 6173 filed in the Peshawar High Court did not disclose that writ petition number 81171 was pending adjudication before a 5-member bench of the Lahore High Court, even though it pertained to the very same matter, that is the holding of intra-party elections in PTI. Writ petition number 6173 filed before the Peshawar High Court was not maintainable because the same issue of intra-party elections had already been assailed by PTI before the Lahore High Court. If two and more courts have concurrent jurisdiction, while a petitioner may elect to avail of his remedy before either court, but having chosen a particular court, the same dispute cannot then be taken to the other court. ECP has been calling upon PTI to hold its intra-party elections since 24th May 2021. At that time, PTI was in the federal government and in some provinces. Therefore, it cannot be stated that ECP was victimizing PTI. Nonetheless, we wanted to satisfy ourselves that the ECP had not acted mala fide or for ulterior reason, or that PTI was discriminated against. It transpired that ECP had passed orders against 13 other registered political parties, which were far more severe than the order passed against PTI. One such case of All Pakistan Muslim League came before this court on 12 January 2024, and the order of the ECP
delisting the said political party was upheld. ECP wanted to ensure that PTI holds intra-party elections. The mere production of a certificate stating that such elections were held would not suffice to establish that intra-party elections had been held when a challenge was thrown to such an assertion. Nor, in our opinion, should ECP concern itself with minor irregularities in the holding of a political party's elections. However, in the instant case, not even prima facie evidence was produced to show that a semblance of elections had been held. 14 PTI members with stated credentials had complained to ECP that elections had not been held. These complaints were brushed aside in the writ petition by simply asserting that they were not members of PTI and thus not entitled to contest elections. But this bare denial was insufficient, particularly when they had credibly established their long association with PTI. And if any member of a political party is expelled, it must be done in accordance with Section 205 of the Act, but no evidence in this regard was forthcoming. Democracy founded Pakistan, a fundamental aspect of which is the ability to put oneself forward as a candidate and to be able to vote, both within a political party and in general elections. Anything less would give rise to authoritarianism, which may lead to dictatorship. The ECP is a constitutional body, and amongst its duties are those mentioned in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Article 219E of which stipulates that ECP must also undertake such functions as prescribed by law, which would include those mentioned in the Act. Section 208 of the Act mandates that political parties must hold intra-party elections periodically, and that a period not exceeding 5 years elapse within 2 elections. It further stipulates that every member of a political party, quote, be provided with an equal opportunity of contesting election for any political party office. Unquote. Members of PTI were not provided nomination papers when they went to get them, nor were any intra-party elections held. Incidentally, the notice issued by PTI Secretariat that their elections were to be held in Peshawar, but did not mention the venue. And then the venue was shifted to Chamkani, which is a village adjacent to Peshawar. Neither before the Lahore High Court nor before the Peshawar High Court any provision of the Act, including Section 215(5), was challenged. The observation of the learned judges that the provision of the law was absurd was uncalled for, particularly when no provision thereof was declared to be unconstitutional. Surprisingly, no declaration was sought nor given that intra-party elections were held in PTI, let alone that the same were held in accordance with the law. If it had been established that elections had been held, then ECP would have to justify if any legal benefit to such a political party was being withheld. But if intra-party elections were not held, the benefits accruing pursuant to the holding of elections could not be claimed. We also do not agree with the learned judges that the ECP did not have, quote, any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party elections of a political party. If such an interpretation is accepted, it would render all provisions in the Act requiring the holding of intra-party elections illusory and of no consequence and be redundant. Therefore, for the aforesaid and detailed reasons to follow, this petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court passed in WP number 6173P of 2023. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. Thank you. अहम खबर आपको दें, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। तो आपको बताएं कि पीटीआई से बल्ला छिन गया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, यानी कि पीटीआई से बल्ला छिन चुका है। आज का अहम ये केस जिसका फैसला, जिसका सबको इंतजार था, और यही फैसला होना था कि क्या बल्ला पीटीआई के पास रहेगा या नहीं रहेगा। तो पीटीआई से बल्ला छिन गया है, तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला
छिन गया है। तो जिसका सबको इंतजार था कि फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का इस अहम केस का क्या आएगा, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुना दिया है कि तहरीक इंसाफ के पास अब बल्ले का निशान नहीं रहेगा, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। तो आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। पीटीआई अब बल्ले के पीटीआई से बल्ले का निशान छिन चुका है। अब आपको ये बताते चले कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला किया गया था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि बादिउल नजर में कोई शवाहिद नहीं मिले कि पीटीआई ने शफाफ इलेक्शन कराए हैं, तो पीटीआई से बल्ले का निशान छिन चुका है। सोहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, अहम फैसला सुना दिया गया है। जी बिल्कुल, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने और ये करार दिया है कि जमहूरियत पार्टी के अंदर भी और मुल्क में भी जरूरी है, और जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने का, उसको बरकरार रखा जाता है। पेशावर मुतफिक नहीं है, ऐसा करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और जो अदालती ऑर्डर सुनाया गया है पढ़कर आपसे थोड़ी देर पहले, उसमें यह कहा गया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं बनता था इंट्रा पार्टी इंतखाबात की स्क्रूटनी करना, उससे भी मुतफिक नहीं है। और जो दीगर ऑब्जर्वेशन सामने आई कि जो कानून को उसमें फजूल करार दिया गया जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया था, उस पर भी पेशावर हाई कोर्ट इस तरह की राय नहीं दे सकता था। साथ ये भी करार दिया गया है कि ये सबूत भी कोई मौजूद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि 2021 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब वो गवर्नमेंट में थी उसको नोटिस जारी किया जा रहा था कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, लेकिन उस वक्त कोरोना की आड़ लेकर वक्त मांगा गया पीटीआई की जानिब से। और जब दोबारा इलेक्शन अभी करवाए भी गए, जब 20 दिन का वक्त दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मेंबरान को शफाफ मौका नहीं दिया कि वो कागजात नामजदगी जमा करवाते या उन इंतखाबात में हिस्सा ले सकते, और फिर जो वेन्यू था उसको भी शिफ्ट किया गया आखिरी दिन तक। लिहाजा कोई भी ऐसा सबूत अदालत के सामने रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया जिससे यह साबित होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कराए हैं। साथ अदालत ने यह भी करार दिया है कि अदालत जरूर ये चीज मानती है कि बहुत ज्यादा बारीकियों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट इलेक्शन करवाकर जमा करवाने का क्या कहा गया था, उस पर भी पूरी तरह अमल दरामद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं किया गया। इसलिए तो पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला था उसको कलअदम करार दिया जाता है और 22 दिसंबर 2023 का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया जाता है। साथ अदालती फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कंडक्ट पर भी सवालात उठाए गए हैं कि पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में अलग अलग दरखास्तें दायर की गई और दोनों अदालतों में नहीं बताया गया कि दूसरी हाई कोर्ट में भी ये मामला जेरे इंतवा है, जबकि ऐसा कानून के मुताबिक नहीं किया जा सकता था। ये वो मुख्तसर ऑर्डर है जो पढ़कर सुनाया गया है। आज की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला महफूज किया था और अब इसको सुना दिया गया है। मुतफिका फैसला ये अभी बताया जा रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तस्लीम किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एतराज़ात मुस्तरद किए हैं कि उनको किसी किस्म का निशाना बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, या फिर उनके इंतखाबात जो है वो शफाफ थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान से इस फैसले के नतीजे में महरूम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से मुस्तरद किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस आर्गूमेंट को भी कि उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है, साथ पूरा रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पेश किया था सुप्रीम कोर्ट में कि कब कब इनको नोटिस जारी किया जाता रहा और सारा तारीखों के साथ हिसाब एक जवाब दलाइल में अदालत के सामने रखा गया था मखदूम अली खान की जानिब से, जिसको तस्लीम करते हुए अदालत ने अपना फैसला दिया है और उसमें उन मेंबरान का भी हवाला दिया है जो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और जिन्होंने अपने बयानात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी दिए थे कि वो पार्टी सेक्रेटेरिएट जाते रहे लेकिन उनको नहीं सुना गया, ना उनको कागजात नामजदगी फराहम किए गए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया अपने फैसले में कि जो जमहूरियत होती है वो बहुत अहम है मुल्क के लिए भी और उसके लिए जरूरी है कि वो जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर भी जमहूरियत आए और इलेक्शन कमीशन को पूरा इख्तियार है कि वो इस मामले में इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं उनकी स्क्रूटनी कर सकता है, ऐसा करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 2 दिन हमने देखा कि ये समाज चली थी, एक दिन पूरा जो है वो मखदूम अली खान ने लिया था जो अपील में आए थे वकील थे इलेक्शन कमीशन के। आज के पूरा दिन पीटीआई के वकला ने दलाइल दिए थे, बैरिस्टर अली जफर ने पहले अपने आर्गूमेंट्स पूरी की थी, जिसके बाद अहमद खान ने भी अदालत के सामने अपने दलाइल रखे थे और ये कहा था कि बुनियादी हक है आइन के आर्टिकल 17 के तहत के पीटीआई इलेक्शन में अपने इंतखाबी निशान के साथ जा सकती है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसला दिया उसमें यह करार दिया है कि कोई बज़ाहिर बादी और नज़र में ऐसे शवाहिद सामने नहीं हैं जिनसे ये कहा जा सके कि पीटीआई ने सर्टिफिकेट जमा कराने की हद तक भी आपने जो इंतखाबात हैं वो अमलन के हैं किसी जगह पर करवाए हैं। ठीक है, आपसे बात करते हैं इस वक्त।